जयधारी माँ नमस्ते। आइए जुड़िए मेरे साथ 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 विद साइना में। दिल से दिल की बात करेंगे। द लाइट विद इन मी ऑनर्स द लाइट विद इन यू। जयधारी माँ, जयधारी माँ। वेरी वेलकम अनुपम। हमारी ऑडियंसेस का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको जयधारी माँ, जय माता दी। आपको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जुड़िए, हमारे बच्चे जुड़ने वाले हमारे साथ। जी, आज हम चर्चा करेंगे वी आर अंडरस्टैंडिंग द माइंडसेट ऑफ blooming flower. That's the teenage years, 13 to 19, 12 से शुरू हो जाता है कि अब तो आप टीनेजर बनने वाले हो, टीनेजर होने वाले हो। एंड जब आप तक 19 तक आते हो फिर कहते हैं बड़े हो गए हैं, 20s में जा रहे हैं। सो इट्स अ फेज ऑफ लाइफ विच वी ऑल हैव गॉन थ्रू। It's a phase when we explore, we are trying to understand, we look at life from a very different perspective. उसी को समझेंगे। Growth is not a straight line. Growth and learning is not a straight line. It goes like this. So, himmat nahi harni, and we keep going forward, going through the curve of life. Anupam, let's start with that question. Growth is not a straight line. So, how does it feel? Yes, definitely. That is, though apparently, especially जब हम खुद बच्चे होते हैं, and I think those of them in the audience who are themselves teenagers, उन्हें लग रहा होगा, of course, growth is a straight line, है ना? Because it's all about growing up, right? So when Saina says growth is not a straight line, what she's actually trying to convey to you is that there will be ups and downs. It's not going to be an easy way. राइट एंड स्पेशली कि अभी तक जब हम छोटे होते हैं ना तो लाइफ इज वे इजियर व्हाई बिकॉज इट्स आई थिंक मच इजियर टू आल्सो काइंड ऑफ लिसन टू आवर पेरेंट्स मम्मी ने कहा ये कहो तो करो तो कर लिया यू नो पापा ने कहा ये पहन लो तो पहन लिया राइट मैम ने कहा डू दिस यू गो अहेड एंड डू इट somehow when we enter into our teenage our adolescence right आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा थोड़ा थोड़ा अपना आने लगता है क्यों करूं मैं अपने मन का क्यों ना पहनूं why should I wear that? My God, mummy, what have you bought for me? मैंने पहनने वाली है ना? So this is a part of a very natural part of adolescence. ठीक है? So one is just accepting it, but ये जो natural part है ना, this causes a little bit of tension. Friction शुरू होती है. क्योंकि पहली बार आप you are sort of discovering yourself. For the first time you're saying, मैं कौन हूँ? What do I like? What kind of a person am I? For the first time, you have started searching for yourself. You have started searching for an identity for yourself. Who am I? है ना? And sometimes during that search, कभी-कभी बहुत ही positive, बहुत ही amazing experiences होते हैं. कभी-कभी not so amazing experiences भी हो जाते हैं. थोड़े lot of heartbreak हो जाता है. We feel sad about stuff. Yes, so that is what Saina meant, that growth is not a straight line. When she said there are ups and downs, what she's trying to say is, particularly in adolescence, हम कहते हैं कि लाइफ में काफी उथल पुथल मचती है, right? किसी के थोड़ी ज्यादा, किसी के थोड़ी कम, पर शायद adolescence में सभी के लाइफ में थोड़े ups and downs जरूर आते हैं. So that's the beauty of this phase. जी Saina. While we're going through the ups and downs of life and experiencing life in a very fresh, new manner, let's talk about the importance of sowing, mindful sowing. Let's explain that
to our children, to our teenagers, what are we sowing every day with intention? Because that is where the life of a teenager takes a turn, because now you're responsible for what you're doing. So the power of intentional, mindful sowing. Yes, when you said that now you are responsible, primarily it is because now you are making your choices. अभी तक आपकी choice कोई और करता था, है ना? Once again, in as simple matters as what dress you're wearing. अभी तक mummy decided, let's say, है ना? Yeah, what you eat. It was completely up to mummy what you eat. This is the time when we sort of start picking, what am I going to wear? What am I going to eat? है ना? There are times मम्मी की भी बात सुननी पड़ती है, पर थोड़ा थोड़ा we start pushing and wanting to do our own thing. तो वही उसमें main thing that comes is with these choices that you make comes the responsibility, because आपने choice की है तो अब जिम्मेदारी भी आपकी हो जाएगी, है ना? So that is how it is happening. And when we are talking about sowing, मतलब बीज बोना, तो कहाँ पे बीज बो रहे हैं हम? वैसे तो of course we should take care of the environment, and I hope all of you are kind to the environment and you grow trees and plants around you, है ना? But यहाँ पे we are talking about whose growth? We are talking about your growth, है ना? और आपके दिमाग में और आपके दिल में भी कोई बीज बोया जाता है. You do so. आप रियलाइज शायद नहीं करते हैं. बहुत बार क्या होता है कि आप अगर रियलाइज नहीं करोगे, that doesn't mean कि आपके दिमाग में कोई बीज बोया नहीं जाएगा. It will happen. The process of sowing will happen. It is better कि आप mindfully इस चीज को करो. And इसमें क्या मतलब है जब हम कह रहे हैं दिमाग में या दिल में बीज बोया जा रहा है? This is the time, you are taking decisions about who am I. मैं क्या चाहती हूँ लाइफ से. तो दैट काइंड ऑफ अ थिंग जो आप अपनी सेल्फ आइडेंटिटी अभी चूज करोगे, दैट इज गोइंग टू स्टे विद यू. वट एवर यू बिलीव अबाउट योर सेल्फ, लाइक आई सेड, you're discovering yourself, you're making choices. What kind of friends do I want to hang around with is a sort of a decision about what kind of a person am I. Do I want to give my studies preference? Do I want to give sports preference? Or do I choose both? As simple a choice as that is also a decision about who am I. Right? तो यही decisions या तो mindfully हो सकती हैं कि आप consciously सोचो कि क्या मैं अपने बारे में अपने लिए सही decisions, positive decisions ले रही हूँ. Am I sowing the right seed? या आप mindfully नहीं करोगे तो inevitably होगा. आप decision नहीं लोगे तो हो सकता है आप अपनी friends की बात सुन के, या किसी ने कहा ओफो तुम तो डफर हो, और आप हो सकता है वही बीज आपके दिमाग में घर कर गया कि वो किसी ने आपसे कह दिया ओफो तुम तो डफर हो, और आपने सोच लिया कि नाउ दैट seed has been sown in your mind saying मैं तो डफर हूं, and you grow up with that. So should you allow yourself? किसी ने कह दिया तुम डफर हो और आप जिंदगी भर मानोगे कि आप डफर हो, है ना? तो यहाँ पे आता है कि क्योंकि आप अब अपने लिए चॉइसेस कर सकते हो, यू शुड बी, सुनो सबकी, पर sift through it things that are positive for you, hold on to them. उन बातों को अपने दिल में घर करने दीजिए, ठीक है ना? और जो चीजें they don't work for you or they are not healthy for you, उन चीजों को अपने दिल से निकाल दो. तो जो बहुत कॉमन चीज शायद आप लोगों ने सुनी भी होगी, कभी कभी सुनने में हंसी आती है, बट इट इज लाइक हमें दो कान क्यों दिए गए हैं कि अगर कोई चीज ऐसे दिमाग में घुसे या सुनने को मिले जो हमें अच्छी नहीं लगती, तो एक कान से घुसती है और दूसरे से बाहर निकल जाने दो. डोंट लेट इट स्टे इनसाइड यू, बिकॉज इफ इट स्टेज इनसाइड यू तो वो आपके अंदर घर कर लेगी, एंड देन दैट थॉट, दैट नेगेटिव थॉट और दैट नेगेटिव फीलिंग विल ग्रो. सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोइंग माइंडफुली. ध्यान दें कि आप किन बातों पे गौर कर रहे हैं, आप कौन सी बात को मान रहे हो कि हाँ ये मैं हूं, या मैं ऐसा बननी चाहती हूँ, या मैं ऐसा बनना चाहता हूँ. ठीक है, आप चॉइस करो. This is a very, very important phase. You are making the choices about your life. Choose what will stay inside your mind. Choose what will grow inside your heart. That is the importance of this period of adolescence.
We have some questions that have come from our lovely teenagers. But before we come to that, I there's an emotion coming to my mind which I would want you to talk about is patience. Mm-hmm. So let's talk about this emotion called patience, sabra, a character trait called patience, an emotion called or a sanskara called patience. Sabr, dheeraj. Mm-hmm. Because when during this phase when we are sowing and we are trying to grow and we sow in a thought, we are sowing in effort. It's like a seed. हमने बो तो दिया. Now we are supposed to nourish it, nurture it, but not dig it up every day to see whether it's growing or not. So you have to also learn patience. And I think as teenagers, as growing youngsters, patience, sabra, dheeraj is a very, very important True. emotion. Ji. Very beautiful, this little example you've chosen, Saina. True. एक तो patience ना इस phase में it is so relevant because it's almost like we're in such a big hurry to grow up, aren't we? Because I think teenage is one time जिसमें ना बहुत ज़्यादा ऐसे होता है कि अभी हम बच्चे भी नहीं हैं, अभी हम grown up भी नहीं हैं, and we don't fit in anywhere. So it's like everyone is in such a big hurry to grow up, right? So it actually is a stage which is marked with a lot of impatience. Yes. And sometimes we take some very, very wrong decisions also. We are in such a big hurry to experience what adults experience that we sometimes indulge and make choices which we shouldn't. राइट तो वो तो एक बड़े लेवल की बात हुई कि यस बी पेशेंट अभी आप ग्रोन अप नहीं हो अभी आप अडल्ट नहीं हो तो डोंट बी इन अ हरी टू ट्राई एक्सपीरियंसेस विच आर मेंट फॉर अडल्ट्स उसमें भी पेशेंस दिखानी है ना और दूसरी बात ये वाली कि जब आपने कोई बोया है ना तो इसका एक ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं कि पेशेंस कोई बहुत छोटी सी बात कि आपको बताया गया कि आप ना बहुत रूड होते हो यू हैव टू लर्न टू हाय Yes. Okay, sorry, I don't know. I wasn't sure. My screen blacked out. I Yes. wasn't sure if I was Yes. Yes. We audible can that. hear you now. Yes. Okay. So, yeah, what I was saying was कि any one thing that we are told कि अच्छा आपने ये करना है, तो we want quick results, है ना? कि आज तो मैंने इतने पोलाइटली बात की या लेट्स से आपकी फ्रेंड से आपका बहुत गंदी लड़ाई हो गई है एंड आपको किसी ने समझाया कि नहीं नहीं तुम ना उसे ऐसे इस तरीके से प्यार से बात करना है ना एंड आप कहते हो की तो मैंने प्यार से बात वो शी स्टिल नॉट टॉकिंग टू मी नाइसली सो इट्स अबाउट दैट वो आपने जो बीज बोया है अभी आपको कंटिन्यू करना है पेशेंटली even for a matter like this don't expect snap results ki see I was polite so just because you were polite once you want an immediate result it doesn't always happen like that so in life you have to know कि कोई भी बीज बोने का मतलब है you are trying to grow something new जो अभी तक नहीं था so when you are trying to bring in something new yes you have to have patience and you have to keep working at it so आपको ये बिलीव करना है कि जैसे लिटरली जब हम बीज बोते हैं कि अब हमने बीज बो दिया मिट्टी में तो हम उसे बार बार खोद के तो चेक नहीं करेंगे कि अभी अंदर है कि नहीं है कितना बड़ा हुआ अगर हम ऐसे करेंगे वो बीज कभी ग्रो कर ही नहीं पाएगा so what is the way we set an intention I want to be this kind of a person. Yes. And after setting that intention, I just believe that it is inside me. And उस बीज के लिए हम क्या करते हैं वी इंश्योर कि उसको पानी मिले है ना उसको धूप मिले उसको प्यार मिले प्लांट्स ऑल्सो लाइक टू बी स्पोकन टू काइंडली yes so the same thing you have to do to yourself you have set an intention I want to be this kind of a person
After that, patiently try to continue and believe that there is something inside you which is going to grow and one day be visible, दिखेगा, नजर आएगा आपको भी और दूसरों को भी, है ना? So yes, patience is a very very important virtue for this phase, खास तौर से इसलिए क्योंकि इस फेज में सबसे ज्यादा हम इम्पेशेंट होते हैं. इस फेज में तसल्ली रखना, पेशेंट होना is not easy. Yes, so all those adolescents among you who are being able to be patient, good show, you're doing a great job. जी. जी, क्वेश्चन लेते हैं. It's a question that's come from a young teenager. देखिए, it's again speaking about mindset. वो बच्चे ने बोला है, we are not taking names here. When any child who wants to come live to ask the question can do that. These are questions that have come to us where these are without the name. I have always been in a one-sided relationship. This is a young teenager. Okay. At last, I am left alone. Right now, I'm alone and thinking that there is no one for me. It's me, my parents, and God who will be, and no one else. But when it comes to life after high school, it would be very difficult for me to handle this thing. This is the question. One-sided relationships. So yes, what is happening is this child who has chosen to stay anonymous, you know, we respect that, but we are so glad that you have reached out and आपने ये सवाल पूछा, because what it is telling us is कि you are experiencing feelings, serious feelings of loneliness, है ना? Though at one point आपका rational thinking भी है, rational thinking में आप कह रहे हो that there is God and my parents, they are for me, है ना? But no one else. So it is about a very, very natural and a very human need that we have. कि yes, हमें parents का प्यार तो चाहिए, हमें God का support भी है, but we also want friends. Yes, this is the phase in life where friends are very important. And when I said, no, this is the phase when we are looking, who am I? Finding our self-identity. So हमारी self-identity often is at this phase particularly, it is directly related to our friend circle, our friends, our peers. उनका रोल हमारी लाइफ में बहुत महत्व रखता है और कहीं पे हम सोचते हैं कि हमें वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाती है कि अगर जैसे इस बच्चे के साथ हो रहा है कि कहीं उसको लग रहा है कि वो वन साइडेड रिलेशनशिप में ही है कि he or she is giving or wants to be friends or is trying to be a good friend or a partner, but the person on the other side is not reciprocating his or her feelings. Yes, and that is what is leaving this person feeling very very left out. तो एक तो पहली चीज आपने रीच आउट किया, मतलब आपने इस फीलिंग को एक्नॉलेज किया है, that is a very positive step. Yes, and the next would be, ideally, if it is possible, you must talk in more detail about this to whoever you can. ठीक है ना? अगर if you're close enough with your parents, any of your parents, talk to them about it. नहीं तो आजकल हमारे सभी के schools में we do have counselors. Talk to your counselor, or maybe there's a teacher who you trust. Maybe you can talk to them. But आप देखोगे कि मैं जितने भी suggestions दे रही हूँ ना, सब adults के दे रही हूँ. क्योंकि इस टाइम में क्या होता है कि अगर यही बात हम अपने ही किसी फ्रेंड, अपने ही किसी एज ग्रुप वाले के साथ डिस्कस करें, है ना, तो उनका जैसे कहते हैं टेक ऑफ लेवल और आपका टेक ऑफ लेवल तो सेम है, उनका लाइफ एक्सपीरियंस आपसे मिलता जुलता ही होगा, सो दे विल नॉट बी एबल टू रियली बी एबल टू गिव यू सम करेक्ट काइंड ऑफ अ गाइडेंस, करेक्ट सपोर्ट. ओके, सो वन, प्लीज डू टॉक टू समवन इन मोर डिटेल अबाउट इट, है ना. इस फोरम में मैं बहुत डिटेल में तो आपसे बात कर नहीं सकती हूँ, तो मैं जान नहीं सकती हूँ. आई वुड हैव लाइक टू नो मोर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन योर माइंड. Yes, but at this time, one thing, yes, please reach out, talk to someone. Second, first,
Maybe what is happening is that you are looking for acceptance from the other because somewhere you feel you are lacking something. How about trying to change it and first trying to like yourself? I think that's the most important step. Think about it. शायद कहीं आपको दिल में कुछ लगता है कि मेरे अंदर कुछ कमी है. There's something about me that's not so nice, and I don't think people will like me. I don't think people will want to be friends with me. Yes. So first become that kind of a person. Do you like you? Any relationship, a relationship of friendship, a relationship of love, should always start with self love. If I like me, then I'll see and I'll realize that others are able to like me too. But if I don't like me, na, so somehow that gets conveyed, and others also find it a little difficult to be friends with me. Maybe that is the case with you. So try. Maybe do let us know if this helped you. Okay? It could be one of many things, but it is highly possible. This is one thing that is sure that always works. Start with self love and then reach out for getting into a relationship. That would be my thing for you, dear. Ji Saina. It's a tough question because this child has said, this youngster has said, I've always been in a one-sided relationship. So it's happening over and over again. I don't know if we need to talk. Saina, you're so right. And actually, that is the reason I felt that this child needs to first work on himself or herself. Because somewhere, whether it has been hard luck and that has made this person start feeling a certain way about himself or herself, or the other way around, definitely the way out of it is to first, understand yourself, accept yourself. Jaise bhi ho. All of us have, or none of us are perfect. Okay? I also have good parts, I have bad parts, I have ugly parts. Okay? I have to accept all of them and say, huh, that's me. There are parts of me I wish I could change, but kya karu, aisi to hu main, है ना? I have to like myself in totality. और जब मैं अपने आप को एक्सेप्ट कर पाऊंगी, दिस इज व्हाट आई मीन बाय सेल्फ लव, है ना? सो दिस चाइल्ड नीड्स टू फर्स्ट वर्क ऑन themselves, feel sufficient, and then step out for a relationship. Because abhi she's trying to complete himself or herself through the other person, which is not happening, which is a very unhealthy thing to happen. What you're saying is very important. Self-acceptance, self-care, a feeling of self-worth is very important. I just have a very tiny point. Beta, somehow can you identify what are you seeking in a relationship? Though you're very young for it, but what are you seeking? What emotion, what quality, what expectation? Try giving it to yourself first. जो आप दूसरे से मांग रहे हो वो खुद को दे के देखो, जो भी आप दूसरे से मांग रहे हो. But this child does need to reach out to somebody who can truly care. Yes, it's all a part of growing up. All will be well. It's all a part of growing up. Another question that has come in before is, Anji? our failures help us, as Anupam ma'am said. But sometimes when I look at my past, I think I'm lying to myself. I can't do better. What should I do? Okay, so this person is talking about failures. So when he or she says, when I look at my past, so they're trying to say that when I look at my past failures, I feel like I'm lying to myself that I can do better. Okay. Yes, you are right. See, saying something like our failures help us, of course, it's very easily said, है ना? But when we experience it in life, na,
It's not so easy to believe it. जब failure हो रहा होता है ना, या failure experience करते हैं, तो at that moment, तो immediate moment, the first reaction is that we feel so disheartened, है ना? So that is also a very natural emotion. We have to allow that. Yes. However, you are talking about when you look at the past. कि आप पीछे का देखते हो और सोचते हो कि नहीं नहीं, I don't think I can do any better than that. ऐसा ही है. हो सकता है कभी कभी ऐसी हताश फीलिंग भी आती है. Sometimes we do feel disheartened and feel I don't think I can do any better. Yes. But then what you need to tell yourself is, one, are you on the right path? Are you forcing yourself down a lane which you should not be? Right? Like, for example, let's say there's a child who is, all of us have a different aptitude. Maybe I'm not very good at maths. Okay. I'm not good at maths, but I have set a goal for myself that I want to clear engineering. Right? So I don't think that would be, I would be being fair to myself. And I'll keep failing, and then I'll keep saying I can't do any better, and I keep feeling disappointed. तो मैंने तो अपने लिए रास्ता ही गलत choose कर लिया. I'm on the wrong path. Why am I forcing myself to go down a path which is not meant for me? Right? So this is what I meant कि आपने ना recheck करना है. एक तो कि आपके सही रास्ते में अपना efforts डाल रहे हो. The path which is where you feel that you are being a failure and you're finding it difficult, that I don't think I really can do better. ठीक है, पहला ये. दूसरा ये होता है कि कभी कभी what happens is we are on the right path. It's not like you can't. It is the right path for you, but you might be using a wrong technique. ठीक है ना? So it is like कि for example मैंने ना soup पीना है, but instead of a spoon I'm using a fork, and then I say, I'm so disappointed, I'm such a failure, I keep trying so hard, ये तो सूप का बोल खत्म ही नहीं हो रहा. So it is something, sometimes we need to look and see कि, oh God, am I just using the wrong technique? Maybe all I need to do is put away the fork and pick up a spoon, and suddenly I will see that, oh, I'm no longer a failure, I'm doing it so quickly. ठीक है ना? तो आपने क्या करना है कि एक बार पॉज करके रीथिंक करो. डोंट जस्ट कीप पुशिंग योरसेल्फ, डोंट जस्ट कीप टेलिंग आई हैव टू ट्राई, आई हैव टू ट्राई, आई हैव टू ट्राई. Okay, so it's not always just about how much of hard work you put in. It is also about, are you putting in the hard work in the correct direction and in the correct manner? वो भी देखना उतना ही जरूरी है. तो एक और चीज, जैसे कि एक होता है कि नहीं मैं तो इतने घंटे पढ़ाई करती हूँ, मैंने इतना सारा लर्न किया, बार 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 वो चैप्टर मैंने 7 times पढ़ लिया, and I still couldn't pass that subject. So that means कि शायद पढ़ के learn करना 7 times पढ़ लेने से it's not working for you. That learning technique is not the right learning technique for you. So we need to find a different learning technique. And the moment we find the learning technique which works for you, आप देखोगे कि 7 times कि आप सिर्फ एक बार उस chapter की तैयारी करोगे and you'll be able to do so well. ठीक है? So for this child, I would say कि बच्चा, don't give up so soon, don't feel disheartened. ठीक है? But again, जो अभी तक कर रहे थे, रुक जाओ. Don't keep pushing yourself. Don't keep repeating the same thing again. Look at it and examine whether you need to change your path or whether you need to change your technique. ठीक है? And इसमें again, जरूरी नहीं है कि you will be able to do it. Ask for someone's help. Anyone, once again, your teacher, your parents, you'll see someone, your tutor. Yes, they might be able to help you. So find someone who you can trust and discuss the matter with them, and they might be able to help you actually analyze it and figure out कि अच्छा ऐसे नहीं, अब ऐसे करके देखो, हो सकता है इस बार आप अच्छे से succeed कर जाओ. जी साइना. This habit of self-reflection, end of the day, is a good habit. If it can start early, it's a good habit where you reflect and you go through your day, what's working, what's not working. So true. Yes, Absolutely. yes. We have a question that's come. Ma'am, my question Kanishk se hai. He's a lovely child of our
family, DL family. Ma'am, my question is, for example, that if someone starts his own business and it doesn't grow more and he gets demotivated and gets involved in bad habits, then how to make our business more efficient? Business. Okay, yes. This is a good question, Kanish. Though when you talk about own business, I'm wondering. Oh, I'm motivated listening to it also, है ना? कि never too young. Why not? Huh? We do have young adolescents who are thinking about setting up businesses, and in real life, yes, it is happening. So why not? Yes. But Kanishk, what I see in your question is one is you're talking about a business that isn't growing more and how to make your business more efficient. है ना? But there's a part in your question which says he gets demotivated and gets involved in bad habits. Yes. So I'm also wondering, maybe Kanish, this is not about you and you're asking for someone else. है ना? कि someone you know, maybe someone older or not. ठीक है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जो हम आंसर करेंगे. So the point is, ये दोनों चीजों को एक तो अलग अलग देखना है ना? इस पर्सन के साथ क्या हुआ है, इट्स वेरी सिमिलर टू जो हम पिछला क्वेश्चन आंसर कर रहे थे कि कहीं पे दैट पर्सन हैज एक्सपीरियंस्ड फेलियर, है ना? कि उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड लगा कि इट्स नॉट ग्रोइंग, इट्स नॉट डूइंग वेल, तो उसकी वजह से, फेलियर की वजह से वो डिमोटिवेटेड हो गए और उस फीलिंग को वो अच्छे से हैंडल नहीं कर पाए और उसकी वजह से दे गॉट इनटू बैड हैबिट्स, है ना? तो कहीं आपने एक पूरा एक पाथ देख लिया है कि इसकी वजह से वो डिमोटिवेट हुए और डिमोटिवेशन की वजह से उनकी बैड हैबिट्स हो गई, राइट? बट अगेन, अगर आप सिर्फ बैड हैबिट्स पे फोकस कर रहे हो, वी डोंट नीड टू बॉदर कि वो किस कारण से बैड हैबिट्स आई, कि वो बिजनेस नहीं चला इसलिए आई या क्यों हुई, है ना? बैड हैबिट्स को टैकल करने का एक कंप्लीटली, इट हैज टू बी कि ओके, इफ वी फील दिस इज अ बैड हैबिट, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट द बैड हैबिट इज, वी हैव टू टैकल इट. डोंट गिव रैशनलाइजेशंस क्योंकि बिजनेस फेल हो गया था इसलिए उस पर्सन ने ऐसा किया, ठीक है ना? क्योंकि एक तरीके से फिर आप उनको एक एक्सक्यूज दे रहे हो टू लीन ऑन कि क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा हुआ इसलिए मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया, ठीक है ना? नो एक्सक्यूजेस फॉर बैड हैबिट्स, रिमेंबर दैट. तो वेदर इट इज यू और वेदर इट इज समवन एल्स, डोंट गिव देम, उन्हें एक लाठी मत दो जिसपे वो लीन कर सकें कि इसलिए मेरी बैड हैबिट है. अगर बैड हैबिट है तो है, आपको लगता है यू वांट टू डू समथिंग अबाउट इट, देन डू समथिंग अबाउट इट, गेट ओवर इट, ठीक है? तो दैट्स वन पार्ट. एंड द अदर पार्ट कि अगर हमने बिजनेस शुरू किया, बिजनेस just otherwise also, business is such a thing ki nobody can predict. There's always a, we say a level of risk. हम अच्छे इंटेंशंस के साथ शुरू करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस अच्छा हो, बट बिजनेस इज, जैसे शुरू में साइना मैम ने कहा था ना, एडोलेसेंस में ग्रोथ कर्व ऐसे होता है, सीधी लाइन नहीं होती. बिजनेस भी ऐसे ही होता है, कभी कभी एकदम से शुरू में बड़ा अच्छा हो जाता है और फिर कभी कभी स्लम्प आता है, किसी किसी का, है ना? एवरीवन हैज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस विद बिजनेस, सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड दैट इट्स ओके, शुरू में डिडंट ग्रो, look at it in that same manner. Firstly, was your business plan a viable business plan? ये तो नहीं कि आपने कुछ बहुत ही ऐसा बिजनेस प्लान ही उठा लिया जिसमें वायबिलिटी का स्कोप है ही नहीं, ठीक है ना? उस चीज को भी रीथिंक करिए. और अगर आपको लगता है कि नहीं है तो वायबल, अच्छा तो था बिजनेस प्लान, तो फिर कोई नहीं, फिर दोबारा कोशिश करिए. इतनी जल्दी हार क्यों मान लेना, है ना? कोशिश तो आपने करनी है. इट हैज टू बी अ केस ऑफ ट्राई 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 अगेन. एंड देयर आर सो मेनी मोटिवेशनल, हम जब छोटे थे हमें वो वाली स्टोरी सुनाई जाती थी, साइना, यू वुड हैव हर्ड about the spider and he had to make his web and kept trying and kept trying. But अब तो उस सब की जरूरत ही नहीं है. Go on YouTube, you have so many motivational videos. Like just this morning I was seeing one of a chotu baby just about maybe 8-9 months old जो अपने स्पून में स्ट्रॉबेरी डाल के खाने की कोशिश कर रहा है. तो उससे नहीं हो रहा था, but didn't give up. And about 10-12 times उसने ट्राई किया and then finally उसने खा लिया. So it was about simply a case of don't give up. दूसरों को लग रहा है, जो हम देख रहे थे, वीडियो भी देख रहे थे, तो हमें लग रहा था ये तो बच्चा खा ही नहीं सकता, इसके हाथ में उतना he is too small, वो कैसे चम्मच में डाल के फ्रूट खा पाएगा. बट उस बच्चे ने खा लिया. क्यों? क्योंकि उसने अपना मन बनाया था मैं तो खाऊंगा. And he didn't give up. He kept at it. So maybe that's what you do.
कि if your business didn't work out at the first go, you can't. It's up to you ना. आप करना चाहते हो तो फिर लगे रहो. आप लगे रहोगे, अपने आप रास्ता भी बनेगा, अपने आप you will find success. है ना? So that is, I would say, Kanish, that should be the way to approach it. And कितने सारे factors होते हैं which you can predict, and there's so many factors you can't predict. And beta, business does involve money, so you must have a cutoff point. Till what point can you invest, where you need to step back. आपको पूरा प्लान बनाना पड़ेगा, because if you're not realistic, that is where you're getting demotivated and taking a different route. Now this is very interesting. This is our teenage group asking, how does one learn from your business mistakes? Okay, yes. So how do you learn from your business mistakes is your mistake will tell you what not to do. Yes, कि क्या करने से didn't work right, so what not to do next time. Your business mistake will tell you what you overlooked, किस चीज पे आपने ध्यान नहीं दिया था, तो इस बार प्लीज उस चीज का ख्याल करिएगा. So mistakes are actually one of the best ways to learn. Yes, because here on you know that when you succeed, I might not know ki why did I succeed, what worked right. It's very difficult to pinpoint and find out कि क्या था जिसकी वजह से सक्सेस मिला. बट जब मिस्टेक होती है ना तो बड़ा क्लियर कट होता है. You'll know exactly what went wrong, and so that is such a good guide. It's such a good learning to know कि अच्छा this is what went wrong, so next time I must not do this, or next time I must make sure I do this. That's how you learn. पर गलतियों से सीखना है, उनको बार बार नहीं दोहराना ना, उनसे सीखना है, and then you grow. There's another question that's come to me. If anxiety occurs too often, then how will it show harmful effects on my body and life? When someone asks if anxiety happens too often, how will it show bad effects on my body and life? Means somewhere that person is worried कि शायद anxiety की वजह से उनके body पे कोई harmful effects होंगे. Yes, and उनकी quality of life पे आगे चलकर होंगे. Yeah. Actually, what happens is कि आप आगे का सोच रहे हो. What about now? If you have truly experienced anxiety, it's one of the most horrible things to experience. It's a very unpleasant place to be at. वो itself experience anxiety का experience ही इतना गंदा होता है. Yes, कि उससे ही क्यों गुजरना. आगे उससे क्या खराब आपके ऊपर बॉडी पे असर होगा वो तो बात है ही. But even now, so it's not like you have to think of the bad effects ahead and that is why get rid of it. It is like, why should you have to live with anxiety? That's not a normal way of life. Okay, so if you or anyone in your life is experiencing anxiety, एक तो don't accept it as a normal. जो बहुत लोग करते हैं, हम लोग करते हैं, हमें लगता है कि ये तो लाइफ का हिस्सा है, मेरे को तो ऐसे ही फीलिंग्स आती हैं, मुझे तो इसी के साथ जीना पड़ेगा. बट ये सबसे पहली चीज आपको जानना है कि नो, यू डोंट हैव टू. A normal way of life does not involve experiencing anxiety. Okay? And especially like you're saying too often means that person is getting anxious, experiencing anxiety more and more. But otherwise कि अगर उससे कोई harmful effects होते हैं, biological effects होते हैं, हो सकता है, yes, क्योंकि हर चीज, any form of stress, it affects our body. ठीक है ना? It affects our digestive system, it affects our cardiovascular system. They do get affected. They get directly affected by any form of stress that we undergo. ठीक है? एक सिंपल वे टू अंडरस्टैंड इट इज कि सिंपल जब हम नर्वस भी फील करते हैं तो कहाँ पे ऐसे पेट में लगता है ना कुछ गुलगुल हो रहा है. दैट फिजिकल फीलिंग. यस, जब एंजाइटी होती है तो ऐसे लगता है कि
मुझे सांस नहीं आ रही, हमें को एकदम से सफोकेशन फील हो रहा है ना? सो यू ऑलवेज हैव सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल सिम्टम्स एसोसिएटेड विद व्हाटएवर फॉर्म ऑफ स्ट्रेस यू आर एक्सपीरियंसिंग। तो वो आपकी बॉडी को इफेक्ट तो करता ही है। एंड लाइफ को कैसे इफेक्ट करता है कि अगर आपको बहुत फ्रीक्वेंटली एंजाइटी हो रही है, तो ओवर टाइम ये सोचना कि वो ठीक हो जाएगी डजंट हैपन। It if nothing is done about it, it'll only become more and more a part of your life और ज्यादा फ्रीक्वेंटली आने लगेगी। इट इज लाइक इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर बीइंग। ठीक है ना? एंड लाइफ को तो ऐसे इफेक्ट करेगी कि अगर मेरे को एंजाइटी बार बार होती है तो मेरे को डर लगेगा कहीं भी बाहर आना जाना, वेदर फॉर ऑफिशियल वर्क, वेदर फॉर विद फ्रेंड्स और फैमिली, कि मुझे लगेगा एकदम से मुझे एंजाइटी हो गई तो मैं क्या करूंगी। तो उस डर की वजह से, ऐसा नहीं है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, बट उस डर से कि अगर एंजाइटी हो गई तो उस चक्कर में आई ट्राई एंड अवॉइड कि छोड़ो मैं नहीं जाती, तो आई स्टॉप गोइंग आउट विद फ्रेंड्स, आई अवॉइड work commitments and so on. That's how it affects our life. So main thing I would like to share with you is, if you or anyone in your life is experiencing anxiety, don't take it as a normal part of life. ठीक है? Don't take it कि oh we have to be strong और थोड़ी देर अपने आप मैनेज करना पड़ता है, ऐसा नहीं है। ये एक लाइफ का नॉर्मल हिस्सा नहीं है। प्लीज सीक हेल्प, get over it, you can get past it, you don't have to live with anxiety. ठीक है? It's not a normal way to live. जी जी, there's another question that's come in. Ma'am, today morning I've done a mistake, but still now I'm unable to overcome. What should I do? हाँ, ये एक बात होती है बच्चों में कि हुआ है, वो बहुत उसको दिल को लगा लेते हैं। yes. Krishna, whatever mistake you have done, you said you've done it this morning, है ना? क्या मिस्टेक थी, किस लेवल की मिस्टेक थी, उससे कोई इतना, मेन थिंग इज कि आपको लगता है आपने गलती की है ना, एंड यू आर स्टिल अनेबल टू ओवरकम। तो कहीं आप अपने आप को इतना केपेबल समझते हो कि जो सुबह गलती की थी अब तो शाम हो गई, अब तक तो आई शुड बी फीलिंग बेटर। ठीक है? तो इंस्टेड व्हाट यू नीड टू डू कृष्णा इज just realize, be kind to yourself. ठीक है? Be kind to yourself in saying it's okay, सुबह की तो ये बात है, इतनी जल्दी हाउ कैन आई गेट ओवर इट, थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है? एंड टू एड टू इट कृष्णा, आज आवर फोकस इज एडोलेसेंस, तो शायद आप भी एडोलेसेंस में हैं अगर, तो आपको ये बात भी रियलाइज करनी है कि एडोलेसेंस इज अ पीरियड जहाँ पे हमारे ना इमोशंस या फीलिंग्स ज्यादा हाइटेंड होते हैं। व्हेन वी आर यंगर तो ना बहुत जल्दी जल्दी कुछ हुआ और हम भूल जाते हैं। ठीक है ना? Adolescence is a time where things stay with us. How do they stay with us? They stay with us in terms of emotions and feelings. और उस फीलिंग को झाड़ना बहुत जल्दी आसान नहीं होता है। They tend to stay with us a little longer. ठीक है? तो अगर आप adolescent period में हैं तो वो भी एक्सेप्ट करो कि पहले से अब आप डिफरेंट हो, और इस वक्त when you grow up also, when you become an adult, you'll realize it will be easier, feelings इतना ज्यादा चिपकेंगी नहीं। But during adolescence, emotions literally sort of rule us, control us, है ना? So just accept it as a part of life कि थोड़ा वक्त लगेगा. And here comes what Saina ma'am had spoken a little while. Patience. Have patience. Be kind to yourself. Have patience. थोड़ा समय से अपने आप you will be able to overcome it. ठीक है ना? Don't rush. Don't feel impatient कि सुबह से शाम हो गई अभी तक I'm not able to overcome it. Just give it some time. I'm sure you'll feel better. ठीक है? And if it still stays with you, जब लगने लगे कि नहीं अब तो बहुत वक्त हो गया, अभी भी I can't, then definitely we must do something about it. I feel, but this is too soon for you to react. ठीक है? तो इतनी जल्दी घबराने की जरूरत नहीं है. Be patient. Give yourself some time. मैं एक चीज हमारे ग्रोइंग बच्चों को जरूर कहना चाहूंगी, where is prayers and faith and surrender to the Almighty? Where is that space in your life? Why isn't the day starting with prayers? Why isn't the day starting with some positive
reading, a positive thought. Figure out what does faith mean to you? What does what does what do prayers mean to you? Figure that out. How can we control our anger? Also, sometimes anger takes us to a wrong path. Yes. Not sometimes, most of the times, anger takes us to a wrong path. Almost all the times you'll see कि गुस्से में रहकर आपने जो भी decision लिया होगा, high probability you'll regret that decision. गुस्से में रहकर आपने कोई भी reaction किया होगा, कुछ बोला, कुछ लिखा, ज्यादातर आप regret करोगे. Yes, क्योंकि उस वक्त our गुस्सा is speaking, we are not speaking. ठीक है? So yes, one sort of rule of the thumb we say is कि जब गुस्से में हो तो तब कोई decisions ना लो, and don't choose your paths, not when you're in anger. ठीक है? The other, what you are asking is how can we control our anger? So to control our anger, पहली बात कि anger को भी acknowledge करो. ठीक है ना? Anger is not a bad emotion. No emotion is bad. Every emotion is a part of you. Accept your anger too. Understand it. ज्यादातर क्या होता है कि आपने जैसे कहा ना कंट्रोल आवर एंगर. कंट्रोल करने की बात तब आती है जब एंगर इतना बढ़ गया होता है कि इट टेक्स ओवर अस. Yes, and that will only happen when you have not acknowledged it. अगर कोई बात आपको ठीक नहीं लग रही है तो आपको गुस्सा आ सकता है. Yes, that is because out of frustration you're feeling frustrated that something is not right, something needs to be done about it, and nothing is being done about it. ठीक है, तो हम कहते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर जब बहुत भर जाता है तो वो एंगर के फॉर्म में फूटता है. तो अगर हम पहले ही उस फ्रस्ट्रेशन को एक्नॉलेज करें, we don't just keep it inside us, we try to do something about it. If you feel something is not right, do something about it, right? Whether in your own life, whether in someone else's, or something that you are seeing. Second, other than frustration, sometimes anger can be, the real emotion behind anger can sometimes be fear. Actually there is something I'm very fearful of. Once again, I feel very vulnerable. I feel I can't do anything. I'm feeling very scared. And then there reaches a point where I just burst out in anger. So I'm actually trying to protect myself. So try and understand. That's what I'm saying. Actually, when you say, how can we control our anger? You have to start being in touch with your emotions. आपके मन में जो भी emotions हैं, जो भी thoughts हैं, उन्हें वक्त दो, उन्हें समझो. Listen to yourself, understand yourself, spend time with your own feelings, give yourself some value. Don't just think what it's not. ज़्यादातर क्या होता है adolescence में ना, हमें लगता है what is important is what others think. This is trendy, this is happening, that is right. But what do you think? अपने बारे में भी एक बार सोचो, कभी सोचो अपने को. Give yourself time, and when you are in touch with your own emotions, आप देखेंगे that naturally you'll be able to, you'll never reach a point where you feel that I need to control my anger. You will even be able to know, yes, this makes me angry, but you won't be getting angry. You get it? There's a difference. This makes me angry, knowing that, all right? This angers me, knowing that, and just losing it completely. इन दोनों में फर्क है, इन दोनों का फर्क समझें. So I'll repeat again, that main thing I would say for you, Anjali, is start getting in touch with yourself, your own feelings, your own emotions. ठीक है? Pent up anger only comes when there are a lot of unattended emotions that are stuffed inside you. और वो एक ज्वालामुखी की तरह फूटते हैं, क्योंकि there was so much that was stuffed inside you. आपके अंदर की थॉट्स, आपके अंदर की फीलिंग्स, उनको एक्नॉलेज करो. And that is the best way to approach what you are trying to do, that is controlling your anger. जी साइना. जी, एंड रिएक्ट करने से पहले अगर हम थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचें,
कि आपके रिएक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या होने वाला है. Will you be able to cope with the consequence of your reaction? तो कई बारी हम सिचुएशन को संभाल लेंगे एंड समय देना इज द बेस्ट way to go about it. And then of course addressing the root cause of the emotion. Keep going back to the root cause of all that you're feeling. कि ये emotion आ कहाँ से रहा है and the consequence of all your reactions. So keep going back to that. The other question that's come here is, my question is like, for example, we are doing something, so how to keep going without getting tired of the process with the same vim and vigor? Didn't get the last bit. With the same. Same vigor, same vigor. Okay. चलते Okay. चलना है. हाँ हाँ. इनके लिए एक तो मैं वही कहूंगी कि आप अपने लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशन सेट कर रहे हो. अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जिस फिगर से शुरू किए, यू हैव टू, यू आर सॉर्ट ऑफ सेटिंग अ वेरी हाई स्टैंडर्ड फॉर योरसेल्फ टू लिव अप टू. It's nice to want to do it, but at the same time also be a little kind to yourself. कि कभी कभी होता है कि बीच बीच में इट डिपेंड्स, है ना, कि जैसे हम कहते हैं कि इट्स अ शॉर्ट रेस, 100 मीटर रेस, अगर आप उसमें रन किए हो, है ना, तो उसमें तो होता है वी हैव टू स्टार्ट एट फुल स्पीड एंड वी हैव टू कीप गोइंग एट फुल स्पीड टिल द एंड. बट इट्स अ शॉर्ट रेस, है ना. But then, if you have ever run in a longer race, a marathon, okay, or even like let's say a 5 kilometers, तो उसमें क्या होता है, उसमें we can't do this. I cannot run with the same vigor. तो मैं तो 5 kilometers run खत्म ही नहीं कर पाऊंगी unless I'm a really trained athlete, है ना, which comes with, in your case, आप लाइफ को अप्रोच कर रहे हो, यस, कुछ सालों में आप बड़े हो जाओगे तो शायद आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे. यू विल बी लाइक अ ट्रेन्ड एथलीट कि जिस विगर पे शुरू किया उसी रेट पे यू कैन कैरी ऑन विद अ टास्क, है ना. बट अभी यू आर स्टिल यंग, so you have to be kind to yourself, because there will be, there are times you need to slow down a little, then pick up pace again and go. इसमें I would say कि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, so long as the growth curve is continuing, so long as काम रुका नहीं. अगर आप आगे बढ़ते जा रहे हो ना, that means you're doing good. ठीक है ना. अपने आप को शाबाशी इस बात की दो कि रुका तो नहीं ना मैं, धीमे हो गया, but I'm still continuing. I'm not going as fast as I was before, but so long as you are continuing, that means you're doing something right. Okay? So let that be your motivation. And keep at it. It's all right. Patience again. Okay? You are still very young. You're just starting out. You're just learning to keep at it. It's good कि आपने अपने लिए ये गोल सेट किया है, अपने लिए चाह सेट की है कि मैं कोई टास्क लूं तो उसे फुल विगर से करता रहूं. ठीक है, आप वहां पर भी पहुंच पाओगे, बट टेक इट लाइक अ ट्रेनिंग कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो सीखना शुरू किया आपने. ठीक. Another thing which could be of importance is why we do what we do. आपकी असली मोटिवेशन क्या है, जो भी आप काम कर रहे हो उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या है और आपकी मोटिवेशन क्या है. आप क्यों कर रहे हो ये, आप किसके लिए कर रहे हो, आपके इरादे कैसे हैं, आपके इरादों में कितनी नेकियत है, कितनी सच्चाई है, बिकॉज दैट कीप्स यू गोइंग. आपके इरादे अगर नेक होंगे, आपके इरादों में सच्चाई होगी, तो आप चलते चलेंगे हमेशा. तो उसके बारे में सोचिए. इनफैक्ट जो साइना मैम ने अभी कहा, आई वुड लाइक टू एड टू इट इन दिस वे कि व्हाट मैम इज ट्राइंग टू टेल यू इज कि वेयर इज द ड्राइव कमिंग फ्रॉम. इज इट कमिंग फ्रॉम विद इन यू और इज इट एन आउटसाइड सोर्स. कहने का मतलब कि आप जो भी कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप करना चाहते हो,
या क्योंकि आपके फ्रेंड्स चाहते हैं आप करो, या क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं आप करो, या क्योंकि आपके टीचर चाहती है आप करो. The moment you own it, the moment the drive comes from within you, जहां वो चाह आपके अंदर से आ गई ना कि मैं ये करना चाहती हूँ, आप देखेंगे कि आपका level of motivation will really go up. And this is what Saina ma'am was trying to tell you, which is a very, very relevant point. So do think about that also. Yes. Anupam, with your permission, can I just take a minute? There are some random points which I've written, Ji, which I feel our children can look into. Beta, we said this in our first session also. If you can look at your food, the kind of food that you're eating, your water intake, your sunshine, your level of physical activity, how much do you pray? What does faith mean to you? Do you understand what does power of karma mean? Do you understand the word karma? As you're growing, you will need to understand this. The power of acceptance, surrender, all that you can control, all that you can't control in life. Are you in touch with your emotions? This is actually a lot of work for all of us, but the energy that you surround yourself with, negative energy, positive energy, your attitude towards life, your social media consumption, what kind of social media are you consuming, emotions like jealousy, comparison, greed, इनके बारे में थोड़ा सोचो. How respectful are you towards your environment, towards your elders, your mindset? Are you reading something? I do feel a few words from your holy scripture is important because it teaches you a way of life. Our holy scriptures teach us how to live. They teach us, they give us that knowledge. Your sanskaras, and of course your eye checkup because you're studying so much, and your salt levels. Sometimes a sodium salt level or a zinc or a chromium salt level up and down can play a little role. So Anupam, if you can also just highlight on all these factors, because ये सब बच्चों के साथ हो रहे होते हैं and they are not aware of it. True. Saina, everything that you listed out is very relevant. Absolutely, everything is on point. But yes, जिस एज में ये लोग हैं कि कभी कभी लगता है इट्स लाइक अ लेक्चर. हाँ, सुन लिया है ना. एंड आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग. यस, डेफिनेटली. सो इसमें क्या है ना कि हर चीज को लिटरली मत लो. इसमें क्या होता है, अलाउ योर पेरेंट्स टू बी योर गाइड ना. ठीक है, ट्रस्ट देम. So it's not like you have to. होते हैं ना, I'm sure all of you have someone at home saying ज़्यादा लेट मत सो, उठ जाओ, या जो भी आप जिस भी रिलीजन को बिलोंग करते हैं, कि I'm sure मम्मी या पापा someone says कि आपने जाके मत्था टेक लिया क्या, आप नहा लो एक बार, है ना, whatever. So just accept it. हाँ, कभी कभी इरिटेटिंग भी लगता है कि बहुत नैग कर रहे हैं, पीछे पड़ रहे हैं, बट जैसे कहते हैं ना कि just accept it that yes, they know something that I don't know and they mean well. उनके जो भी इंटेंशंस हैं, वो लोग जो भी कह रहे हैं, वो चीज मुझे हार्म नहीं करेगी, बल्कि कहीं पे इट विल हेल्प मी, है ना. सो दैट इज व्हाई कि मे बी जस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड फॉलो. तो जो भी आपके घर का, हर एक घर का संस्कार अलग होता है, बट हर एक घर का संस्कार खूबसूरत होता है. यू हैव टू नो दैट. ठीक है ना. हर रिलीजन की अप्रोच अलग होती है, बट एट द एंड ऑफ इट हर रिलीजन हमारे को एक बहुत ही खूबसूरत दिशा में लेके जाता है. इट इज अ सोर्स ऑफ इनर हैप्पीनेस. ठीक है ना. एंड इट इज एट दिस पॉइंट यू मे फील यू डोंट नीड इट, अग्रीड, बट व्हाट हैपेंस इज लेटर इन लाइफ व्हेन यू नीड इट, तो एकदम से वो हमारे पास आता नहीं है. वी हैव टू कैरी इट विद अस फ्रॉम नाउ. दैट इज ऑल दैट यू आर बीइंग रिक्वेस्टेड टू डू.
ठीक है ना? So same, like whether your food habits or whatever, these things don't happen. It doesn't happen, okay, now I'm 40 years old, so now I am going to. It's very difficult to start something anew. तो अगर मेरे को शुरू से ही आदत थी कि हाँ सब कुछ खाते हैं पर अच्छा घर का खाना भी खा लेते हैं, I don't find it torturous to eat home cooked meals. So it is easier for me to adjust to what life needs from me at that point in life. तो आप एक्चुअली अभी यहाँ अडोलेसेंस में आप तैयारी कर रहे हो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. यू नो, you're kind of setting the platform, so to say. You're setting your thing कि कहाँ आपका टेक ऑफ लेवल होगा, आप कहाँ तक पहुंच पाओगे. तो अगर आप लाइफ में बहुत आगे जाना चाहते हो, अगर आप लाइफ में हर टाइप का सक्सेस और हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो आपको ये सब चीजें अपने साथ लेकर जानी है. ठीक है ना? और ये सब चीजें जो कि आपके घर के बड़े बुजुर्ग आपको सिखाते हैं या बताते हैं. ठीक है? तो उनकी बातों को सुनो, फॉलो, ट्राई टू फॉलो जितना कर सकते हो. इट्स ओके, कभी कभी हर बात नहीं भी फॉलो कर पाते, तो जितना कर सकते हो अपनी तरफ से कोशिश करो. एंड you'll see, you will reach, you will, sort of set yourself up for success and for happiness in life. That's how it happens. आजकल के टाइम्स में ये उम्र ऐसी हो गई है जहाँ पर आई थिंक हम एक फाउंडेशन बना रहे हैं, एंड दे आर वे अहेड ऑफ टाइम्स. यू नो, our children, there's so much of exposure, so ये समय है थोड़ा सा बुनियाद बनाने का. Look at even the kind of questions that have come. So बहुत सोच रहे हैं बच्चे, they're going through a lot, so all this can help. They're quite ahead of their times, which is a good thing. समय को देखकर लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. मैम, हाउ टू मैनेज गिल्ट? Okay, now how to manage guilt? This seems like such a simple question, but actually it has very deep roots. Yes, why? Because guilt about what? Yes, that's what it is. It is completely this is not a question जिसका हम कहेंगे कि एक generic answer हो सकता है. It has to be very specific to आप क्या experience कर रहे हैं, है ना? But in general, just so that आप समझ पाओ कि guilt can be of many forms. Guilt can be for something that I regret doing. Yes, I wish I hadn't done it. All right. So once again, you can approach it in that manner. So can you do something about it now? If you can, please go ahead and do it. If it is one of those situations where you can't do anything about it, right? कि चाह कर भी but इसके बारे में अब कुछ हो तो सकता नहीं. तो in that case, then you have to be able to just accept it, है ना? Just accept कि अब जो है सो है, चाह कर भी अब इसके बारे में कुछ हो तो सकता नहीं. तो you have to be able to put it into one or the other. और जो भी है, अगर कुछ हो सकता है उसके बारे में, then you have to, no matter how difficult it is, you have to go ahead and try and do something to fix the situation. ठीक है? Now, there comes another type of guilt, which is sometimes, which we say it's an off-centered guilt in the sense कि it's not really आपने कुछ किया, but आप बेकार में उस बात का guilt carry कर रहे हो. It is something like कि I feel guilty कि मेरी वजह से मम्मी को सुबह सुबह उठना पड़ता है, मेरी वजह से उनको इतना सुबह सुबह उठ के टिफिन बनाना पड़ता है. There are children who even carry guilt about that, right? So that is what I will say an off-center guilt. It's not really you. You don't have to carry the burden of that. ठीक है? कुछ चीजों में उस टाइप की जो चीजें होती हैं उसमें हम कहते हैं कि इट्स ऑलराइट, वो आपकी मम्मी का और आपका रिलेशन है, वो माँ बच्चे का रिलेशन है. ठीक है? तो बच्चे को ये भार नहीं लेना है कि माँ उसके लिए कुछ कर रही है. ठीक है ना? तो अगर उस टाइप की गिल्ट है तो देन वी हैव टू वर्क आउट एंड हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट बेटा दिस इज यू आर कैरिंग द वेट ऑफ समथिंग यू डोंट नीड टू कैरी. ठीक है? सो दैट्स व्हाई आई सेड इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि जब आप कह रहे हो गिल्ट तो वो एक्चुअली है क्या. इज इट लाइक समथिंग दैट लिटरली मैंने कुछ गलत काम किया और उसका गिल्ट है, और इज इट समथिंग लाइक एन ऑफ सेंटर गिल्ट कि मैं कुछ ऐसा बाहर कैरी कर रही हूँ जो एक्चुअली इज नॉट माइंड टू कैरी. ठीक है?
So I hope कि इन दोनों के बीच में कहीं पे you might be able to find an answer to your question. All right, and otherwise we are still here for you. So whenever, however, we are there. So you must keep in touch. Okay, we'll try our best to keep helping you out. Ji Sai. I think we'll close our session today, and we'll meet again next month. And just a lot of love for all our children, sending a lot of love, prayers, blessings to all of them, and they're all bright kids. सब ठीक हो जाना है, सब अच्छा है, all is well, all is blessed. बस रोशनी की तरफ अपना चेहरा रखो और आगे बढ़ते जाओ, सब अच्छा होगा, सब ठीक है. So we see you next month. Yes, look forward to that, Saina. All right. Thank you to all our children. Thank you. Jai Dhati Ma. Thank you.